Hello, dear learners. Hope you are doing well and studying hard. As you all know, we are doing this series of PYQ for quite a while now. Already completed videos from 14 till 2018. You can go through the site, channel, and you can also check the link card provided. For PDFs, you can go to the Telegram channel. The link is in description. And please let me know in the comments from which region of India you are watching from and which language is more comfortable, as your feedbacks values a lot. So without wasting much of your time, let's get started now. The very first question is, what is not true about Bagor city? Bagor city, what is not true? Okay, not true. So it is situated in Rajasthan. For its purely Mesolithic pre-pottery phase, we have carbon dates in the range of 5365 to 3775 BC. From its very beginning, traces of agriculture have been found. Zhu, ox, sheep, goat, pig were domesticated right from approximately circa 5000 BC. Okay, so Bagor city or Bagor site, we all know it is in Rajasthan and it is one of the Mesolithic pre-pottery phase site. Okay, so two options are eliminated. Then the agriculture evidence, it is wrong. Option C is not true, because although agriculture is present, but it was not present from the beginning, which is said here it is present from the beginning. No, it was not. Okay, the earliest phase of the site belongs to Mesolithic period, and hunting, gathering, fishing activities were prevalent there. Okay, it was only during the later Mesolithic stage when the agriculture evolved. Then Zubu, ox, sheep, goat, pig domesticated, that is correct. And during the later stage, that is also during the later stage when agriculture was prevalent. Okay, and which was followed by the Neolithic Neolithic period. चलिए आगे. Option question number 2. Match list 1 with list 2. So goes the sites and their chronology. Okay. When it was found, Kili Gul Muhammad, Dam Sadat, Kalibangan, Rana Gundai. We will check the answer first and then we will correct ourselves. The answer is option B, that is A, 4555 to 3885 BC. Dam Sadat, it is 3370 to 2350 BC. Kalibangan, the Harappan site, famous Harappan site, it is 2980 to 1865 BC. Rana Gundai, it is 4550 to 3165 BC. Okay. Kiligul Muhammad is a site known for domestic animal motifs. Neolithic site है Quetta Valley में. Then Dam Sadat, it is a site in Quetta Valley, Balochistan. Okay. And आगे बढ़ेंगे. Kalibangan, you all know, it is the Harappan site. Fire pits are found here and the main evidence of ploughed agricultural land. Then Rana Gundai, it is a site in Pakistan. Site from Pakistan. Okay, Rana Gundai is a site from Pakistan, and it yielded the ceramic pottery evidences. Like सबसे पहले 5 phases में divided Rana Gundai. So first is domesticated animal, second is ceramic pottery, third is agricultural lands, fourth and fifth are about decline of the culture. Okay, now next question. Identify the site which does not attest to the presence of horse. Which is the site which is not attested with the presence of horse? Dalighai, Burzahom, Perak, Inamgaon. So we all know it is Burzahom, which is in Kashmir, 1700 BC. Neolithic site located in the Srinagar district of Kashmir. This site does not have any evidence of horse remains. Also, the site is the transition in human habitation from Neolithic to megalithic. Okay. And pit dwelling, वहाँ पर घर बनाते थे जो हट्स के जैसे, मतलब ज़मीन के अंदर जो घर बनते हैं उस टाइप के घर जो यूजुअली एंड्स बनाते हैं. देन गली खाई, इट इज़ इन पाकिस्तान, स्वाट वैली, एंड skeleton remains of horse are found here. Perak is in Balochistan, Pakistan. Earliest evidence of horse remains come from this place. Note down, earliest evidence of horse remains comes from this site. Terracotta and clay figurines of horse are also found in Perak, and bones were also found from this site. Then Inamgaon, which is in Maharashtra, remains of horse were found from here also. Okay, moving now आगे. Match list 1. Question number 4. List 1 with authors and their articles. Irfan Habib, Bibi Lal, R.X. Meadow, Marcia A. Fentress. So the correct answer, we will first check the correct answer. It is option D, option 4. Irfan Habib is associated with imagining River Saraswati, a defense of common sense.
B.B. Lal is associated with 1. Perhaps the earliest plot field so far excavated anywhere in the world. R.H. Meadow is associated with option 4. The domestication and exploitation of plant and animals in Greater Indus Valley. Marcia Fentress with 3. Regional interaction in Indus Valley urbanization. Okay. Now moving now. 5th. The radiocarbon dating is applied in which of the following? Radiocarbon dating is applied in epigraphy, archaeology, manuscripts, archival. It is in archaeology. Option B. We all know radiocarbon dating is very important tool in the archaeology. Determine the age of organic materials such as wood, bone, charcoal. And this helps to know the dates of archaeological sites, artifacts and human remains. Also horse remains too. Okay. C for carbon, a radioactive isotope of carbon is used. And उसी से हमें समझ में आता है what is the date associated. By measuring the amount of carbon 14 remaining in an object, archaeologists can estimate how long ago the object died. Question number 6. Which of the following statements with regard to Bharatpur archaeological site is not correct? यहाँ पर पूछा है not correct. Okay. It is located in West Bengal. It is located in West Bengal. It is situated in Rajasthan, from where the traces of bones of migratory birds were found. For period 1, there was evidence for fishing, hunting and agriculture. Period 2 provided evidence of the use of iron, northern black polished ware. So the correct answer is option B. This is not the migratory bird site which is present now. It is the Chalcolithic site, Neolithic Chalcolithic site, which is Bharatpur archaeological site present in Burdwan district of West Bengal. Okay, and the site is the site has stupas of Buddhist religious practices and जो birds remain है bones वो वाला इसीलिए wrong है. Okay, Bharatpur site is also there in Rajasthan and you may consider that site as true, but it is present site for migratory birds. Okay. Question number 7. Once the Ahar iron is disposed of, all 14C dates for the earliest iron levels in India appear to cluster around 1000 BC or little earlier. Whose opinion is this? It is of Irfan Habib. Okay, Ahar culture. By the way, who was Irfan Habib? First we will see that. Irfan Habib, a renowned Indian historian who is specialized in economic history of India. And in his book, The Vedic Age and the Coming of Iron. Which book it is? The Vedic Age and Coming of Iron. His book, in which he has given this statement. Okay. He points out that the 14C dates for earliest iron levels in India all clustered around this period and that there is no evidence of iron use in India before this time. Okay, कौन से टाइम पर आए थे? पेंटेड ग्रे वेयर 1000 to 600 BC, 1000 BC to 600 BC के अप्रॉक्सीमेटली ये आया था, ऐसा बोला जाता है. Habib's opinion has been influential in shaping the prevailing view of chronology of Iron Age in India. Okay. Now, interesting question again. Match list 1 with list 2. Text and authors. Kavya Darsha, Ashtadhyayi, Mahabhashya, Tantraloka. So the correct answer, Ashtadhyayi की पनीनी बाय अष्टाध्यायी. बी का 3 किस में ये देख लो, आंसर मिल जाएगा एक ही ऑप्शन में. सी बाकी तो सब पता ही है वैसे भी. काव्य दर्श बाय ददिन, अष्टाध्यायी ऑफ पनीनी, महाभाष्य ऑफ पतंजलि and Tantraloka of Abhinav Gupta. Okay, very interesting question and very easy too. So Kavya Darsha by Dadin, earliest surviving systematic treatment of poetics in Sanskrit, and although he produced literature on his own, most notable was दास कुमार चरिता. काव्य दर्शा और दास कुमार चरिता ये 2 बुक्स है इसके ददिन के. ठीक है. अष्टाध्यायी इंडियन ग्रामरियन पन्निनी and it is a book for Sanskrit grammar, based on Sanskrit grammar, and it has 8 chapters which is further divided into quarter chapters. Mahabhashya by Patanjali, it is also based on Sanskrit grammar. Okay. Tantraloka by Abhinav Gupta, lights on Tantra, and
presents the teachings of Kula and Trika systems. ओके आगे बढ़ेंगे अभी हम. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. प्रिंसिपलिटी और किंगडम एंड देयर जोग्राफिकल लिमिट्स. ठीक है. सो सबसे पहले अवंती, गांधार, छेदी, वज्जी. द करेक्ट आंसर इज, वैसे ये चीज़ नोटिस करो, अवंती माला रीजन, गांधार मॉडर्न पेशावर, तो ये दोनों तो सही है. उसके बाद में सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए उन्होंने सी और डी में ही पॉइंट रखा है, बट हमारा करेक्ट आंसर ए है बिकॉज ये सारे रीजन्स करेक्टली मैच्ड. अवंती, माला रीजन और मालवा सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश. मॉडर्न पेशावर एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट्स, कश्मीर वैली, पाकिस्तान रीजन ऑल्सो. छेदी, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड इन सेंट्रल इंडिया. वज्जी, नॉर्थ ऑफ द गंगा अप टू नेपाल हिल्स. ओके. अवंती was very important kingdom located in the western India and was central India, and was considered to be one of the 4 important monarchies during the time of Buddhism. Gandhar, Takshashila capital, and famous Takshashila University is also there, present from Kashmir, modern day Kashmir, up to the Kabul Valley. Then Chedi and Gandhar School of Art is prevalent, most famous. Chedi, kingdom of Chedi, eastern parts of Bundelkhand, and Chedi was ruled by Shishupal, जो मगध एंड कुरु किंग्स के साथ में शिशुपाल इज एसोसिएटेड ड्यूरिंग द महाभारत एज. वज्जी, इट ले नॉर्थ ऑफ गंगा, दैट इज नेपाल हिल्स, एंड द वेरी फेमस इज लिच्छावीज. वज्जी इज फेमस ड्यू टू द लिच्छावीज. एंड बाय लिच्छावीज वेर फेमस? लेट मी नो इन द कमेंट्स. कमेंट्स किया करो ताकि आइडिया आए कि कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 10th, अबाउट राजशेखरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? He was the most powerful ruler 985 to 1014 CE of Chola period. He was court poet 9th and 10th century of the Pratyahara rulers Mahendrapala and Mahipala. He was first known ruler of the Satavahanas 230 BC. Mentioned in the Purans, he is known to have composed Siri Vanaralu Pattal, one of the 10 idols of the Sangam anthology. So the correct answer is option B. He was the court poet. यहाँ पर correct statement पूछा है. He was the court poet of the Pratyahara rulers, Rajashekara. ठीक है. According to the school of thought, the Gurjara was the name of territory ruled by the Pratyahara. That's why they are known as Gurjara Pratyaharas. And this dynasty was prevalent around the 9th-10th century. Rajashekara wrote the book Kapur Manjari. I am giving the book's name because questions come based on the book's name and all. We all know that now. Then Kavya Mimamsa. Okay. Other works are like Balabharata, Bal Ramayana, Shrida Shalabhanjika, something like that. I don't remember. Something like that it is. Okay. All his work reflect the woman-centric aspects. A very important point that he was more woman-centric. His books were more woman-centric. Rajashekara's. Okay. उस टाइम पर भी वुमेन्स को इम्पोर्टेंस था. अभी कम हो रहा था बीच में, फिर से बढ़ना चाहिए बिकॉज वुमेन आर नो लेसर देन एनीवन. Given assertion and reasoning. Assertion: Ajatashatru is believed to have murdered his father in about 493 BC. He annexed Koshala despite the fact that its ruler was his maternal uncle. Reason: Ajatashatru, the son of Bimbisar of Magad, was impatient to become ruler of Magad and annex the regions. Which is the correct statement? It is option A. Why? Because both have some of the other relation. Ajatashatru was impatient, so he murdered his father and annexed the territories. That is what? And murdered his father and annexed the territories of his maternal uncle. मामा की टेरिटरीज हड़प ली थी. ओके. अजातशत्रु जो कहाँ के रूलर थे? मगध के. ओके. He was very powerful ruler and he increased the size and power of his kingdom. Like that was the most big and powerful kingdom of the time, Magad kingdom. And how he increased the power? By annexing the territories. आगे बढ़ेंगे. Question number 12. Identify the temple from the group of temples at Mahakuteshwar near Badami, comprising a sanctum and a portico which is of some importance. It is Sangameshwara temple. Option B. Sangameshwara temple, most important temple in the Mahakuta group of temples, Dravidian style, from the 8th century CE. And the outer mandapa, main sanctum, Nandi,
are present in the temple. Okay. The sculptures are semi-finished on the pillars, and there are several small pedestals outside the temple also. So one of the most important thing is the Sangameshwara temple is one of the biggest in complex, and it is said to be the earliest Padakkal group of temples. Okay. And कौन सी deity है वहाँ पर present? Sangameshwara, which is a form of Shiva. Hope it is understandable. Question number 13. There is little doubt. Okay, assertion and reasoning. There is little doubt now that certain facets of Indus civilization survived into the second and first millennium cultures. The earlier hiatus between the Indus civilization and Vedic culture is no longer acceptable. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. Okay. Assertion is true because Indus script survived into the second and first millennium BC, and that is what the evidence is about. Like the seals, the non-deciphered script. Reason is correct because archaeological evidence has shown that there is continuous cultural development from Indus to Vedic time. So there is no gap between, and these two are separate phases but in continuation. And one more thing, yes, यहाँ पर जो ये certain facets continue नहीं हुए, it may be possible that the facets may be introduced from the outside of the Indus civilization sites or from outside India. So therefore they both are true, but there is no certain relationship between them, so we have considered the option B. Again, assertion and reasoning. The nationalist historical writings saw the bipolarity of the spiritual content of Indian culture and materialist basis of Western culture as an essential inherent difference. This was in part a reaction to view that religion was such a central factor in the traditional society of India is obstructed progress. Correct answer is option A. Now, the nationalist historical writings saw the bipolarity of spiritual content of Indian culture. जो nationalist थे उन्होंने क्या देखा? Spiritual content of the Indian culture. And जो materialist basis था वो Western culture ने देखा. Okay? So, assertion is true because ये difference था ये दोनों के thinking में, दोनों के writing में भी. Then one minute. Reason. And when they say that religion was the central factor in traditional society of India, it obstructed the progress. During the 19th century approximately, the Western culture was more influenced by Renaissance and everything, that they were thinking religion is something which is holding back the people, the progress. So it was like it is more backward and superstitious to believe in religion, and therefore they were promoting materialism. While the nationalists, the Indian point of view was more spiritual. Okay, that is the difference between both the statements, and therefore R is the correct explanation of A. Question number 15. With regard to Agraharas, which of the following statement is correct? It was a Sanskrit term used especially mid-first millennium CE onwards. It was a term to designate a category of land grants made to Brahmanas. Generally, these grants were in perpetuity. Donis were given the right to organize production and collect revenue and order and other resources from the land. Option C. Correct answer is option C. Agraharas were the land grants given to Brahmanas. Both statements 1 and 2 are the correct. These grants were usually in perpetuity, and donis were given to organize production and collect revenue from the land. This is also correct statement. Okay. Brahmanas कौन थे? Priestly class, and perpetuity meaning that they were not subject to revocation. वापस से उनसे वो नहीं लेंगे, उन्हीं के पास रहेंगे, उनके hereditary रहेगी वो land. Okay. Then donis were given the right to collect the revenue. Correct. They were but obviously using it, this allowed them to support their families and themselves, and also to contribute to the economic development. Economic development भी हो रहा था because agriculture and all was spreading at a greater pace. 16. The public display of inscribed text on rock faces and freestanding pillars was followed by Indian ruler in limitation of practices followed by Achaemenids. Okay. Practice of inscribing royal decrees and other important text was common in the Achaemenids, and this practice was continued by Indian rulers but in a limited way.
ओके, अक्यूमेनिड्स ने कैसा किया था, ओल्ड पर्शियन, बेबीलोन, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखने स्टार्ट किए थे. एंड इंडियन रूलर्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? इट वॉज संस्कृत लैंग्वेज यूज बाय द इंडियन रूलर्स. ओके. 17. Perhaps it was much for the Saka cultural innovation for their political domination that a new era came to be named after them. What, according to Sheldon Pollock, was this cultural innovation? Use of Sanskrit for political purposes. The Shakas, though they were nomadic people from Central Asia, came during the 2nd century BC approximately, and they were not ethnically Indian, like they were Iranian, but they adopted Sanskrit as their administration language. उन्होंने संस्कृत का यूज़ किया ताकि वो लोगों में अपनी जगह बना सके, बिकॉज संस्कृत वॉज द डोमिनेटिंग लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम, एंड अगर लोगों में अपना दबदबा बनाना है तो संस्कृत इज़ द मोस्ट. ठीक है. द यूज़ ऑफ संस्कृत ऑल्सो हेल्प द साखास टू कंसोलिडेट देयर पावर, and it was a way of legitimizing their rule, of asserting their power over the Hindu elites. Okay. And one more thing, due to this step, it also shaped the development of Hinduism and the spread of Sanskrit language. आगे बढ़ेंगे. Assertion and reasoning. Question number 18. It is argued that eulogy of poets was not basis of legitimization of political power in early historical South India. The poets of the period were dependent on the kings for their material well-being. So the correct answer is option D. A is false but R is true. Material well-being मतलब जो उनका रोज़ का खाना पीना वगैरह सब कुछ, अगर उन्होंने अच्छी पोएम्स लिखे, अच्छा वर्क लिखा, तो ही किंग्स उनसे इम्प्रेस होंगे और फिर उन्हें ग्रांट्स देंगे, मनी देंगे, कैश देंगे, जो भी देंगे, सो उसी से उनका घर चलता था. Assertion is false because eulogy of poets was indeed a basis of legitimization of political and power in early historical South India. Okay. Poets of the period were often employed by the kings to write poems of praise, like they were writing poems in the praise of the king, and the king was giving them the gifts, the grants, everything, and this is how the relation goes. And these poems also helped in disseminating their image as a wise and benevolent king, and his authority was justified by this, so he was asserting his more power, political power, across the South India, and that is what the main aim of the writing poems was. And yes, their dependency on the king made them write more poems and about the king, and that is why how they glorify the king and make the king more popular among the masses. Question number 19. Which of the following refers to a local center of exchange in between small periodic markets and large trade centers? Mandapika. Option 1, Mandapika. Note down, it is a term. As I have already said, do make the separate list of all the terms, and terms also divide the terms in two types: terms associated with people and terms associated with the places or the non-living things. It helps when you do the revision. I have made while my preparation separate pages for everything. Like books and authors were divided, and books and authors that too from ancient, medieval and modern. Medieval and modern were divided into English and the nationalist, Western and the nationalist. Like that, do the divisions, and this division of work of writing helps while the revision. The main point of whole preparation is to do a proper revision before going to the exam. So make separate points. Okay. Mandapika, small market where nearby villages would bring their products to sale. Okay. The Mandapika, which also means hall or assembly place in Sanskrit, that is why it is a trade center. Okay. And when it was prevalent more during the Chola period in the South India. Question number 20. Which of the following is not correctly matched? Nagara style. The base of Nagara temples is square with a number of projections in the middle of each side, giving it a cruciform shape. Dravida style. The most important feature of this style is its pyramidal shikharas. Kashmiri style. It is purely a local style with no traces of any influences from the outside world. Vesara style. It is a hybrid of northern and southern styles. So our correct answer is ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने बोला है नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस. ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लुएंस ना हो. इनफैक्ट कश्मीर वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन, बाय द सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर एंड राइटिंग्स, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो प्लीज़ लुक एट देम ऑल्सो एज दे मे हेल्प यू. ओके.
Nagara style, that is northern style, Dravida southern, and Vaisara is the mixed style. Okay. Kashmiri style face either the west or the east, and the temples have straight edged pyramidal roof. Kashmiri architecture is different from the rest of India, as most temples are square or oblong in design. It is different, and it is not only a local style, but dresses have been from the outside world also. Okay. Now moving further, question number 21. Which of the following is not true about Mill's history of British India? It founded the traditional institutions of India static and retrogressive. The analysis made by Mill suited the needs of imperial government. It became a textbook on India for the British officers for Indian civil services at Helbury College. It was not informed by English utilitarian philosophy. Option D. James Mill, a Scottish-born person and father of philosophy. He studied in the University of Edinburgh, so basically he was more influenced by the Western ideology. Then he wrote the book The History of British India, which he published in 1817, and Mill had never travelled India and knew none of the Indian languages. फिर भी उसने बुक लिखी है उसके ऊपर. It was informed by English utilitarian philosophy. No, though James Mill was a utilitarian, we will see about him. In fact, he is one of the main 4 founders of the utilitarian philosophy, prominent utilitarian, and therefore his work was more informed by the utilitarian philosophy, heavily influenced. More specifically, his work was heavily influenced by the utilitarian philosophy. Like Mill argues that the British should rule India to promote the greatest happiness of the greatest number of Indians. जैसे कि सबका भला होना, greatest good of greatest number, utilitarian philosophy होती है, right? Question number 22. Which of the following is incorrect? Long after writing became an everyday practice, a bias towards oral persisted. Bhartrihari declared that understanding is the form of speech. Speech-informed awareness is the foundation of all knowledge. The Indians thus privileged of Granthastha over Kanthastha. The view of Latin grammarians of the 9th century was quite contrast to the normative Indian views. In Europe, the learned man was therefore the literatus. Correct answer is option C. The Indians thus privileged of Granthastha. What is Granthastha? Means the one who is learned through the scriptures, learned in the scriptures, and Kanthastha, the one who is learned through oral tradition. Orals, like बोलकर सुनकर जो इसने सीखा वो कंठस्थ है, और जो पढ़कर सीखा है वो है ग्रंथस्थ. ठीक है. Then Bhartrihari's view was both types of learning are important and neither should be privileged over the other. But the Latin grammarians' view was prevalent more towards the written tradition. Okay. They were more towards the written writing and seen it as more permanent and reliable form of knowledge. Okay. But Indians were more influenced by the oral tradition. जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, bias towards oral persisted because हमारे यहाँ पहले से स्टार्टिंग से ही ओरल था, रिटन नहीं था, इसीलिए जो ओरल को लेकर जो उनका व्यू था वो काफ़ी टाइम तक वैसा ही था. इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे लोग सुनकर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं रादर देन बोलकर या लिखकर, पढ़कर. लिखकर भी सीखते हैं, बट सुनकर और सुनना अभी भी बेटर है. जैसे आप वीडियो सुन रहे हैं, जस्ट लाइक यू पीपल आर हियरिंग द वीडियोज एंड वॉचिंग इट, इट इज़ मोर ऑडियो विजुअल टाइप विच इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, एंड इट इज़ प्रूवन दैट ऑडियो विजुअल हैज़ मोर इम्पैक्ट देन जस्ट रीडिंग. ओके. Moving further now, question number 23. Which of the following is not true about the different positions ascribed to mixed caste by Manusmriti? Okay, Manusmriti. Children born of wives 1 degree lower in Varna status were somewhat acceptable as a part of twice born. Those born from women separated in status by 2 or 3 degrees led the creation of new group within the Shudra fold. In case the status of a woman was higher than that of a man, the progeny of such marriage was placed lower in status than the 2 parents. Anuloma marriages were treated as more violative of the sacred law than Pratiloma. Correct answer है option D. यहाँ पर क्या पूछा है? Which is not true. So it is option 4, which is not true. बाकी all other statements are true. Anuloma is higher caste, man marries the lower caste, and Pratiloma is lower caste, man marries the higher caste. So Anuloma position, offspring position, same as the higher caste parents. But in Pratiloma, the position of the offspring is the lowest of all the 4 varnas. ठीक है. तो प्रतिलोमा इज मोर वॉलेटिव रादर देन द अनुलोमा. टाइप्स ऑफ मैरिज कितने हैं? टोटल 8 टाइप्स ऑफ मैरिज है. आगे वीडियोस में फ्रॉम 2019 2021 वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम ऑल द 8 टाइप्स बिकॉज वी वोंट एक्सटेंड द टाइम ऑफ वीडियो मच. वी वांट शॉर्ट वीडियोस अप्रोक्सीमेटली 1 to 1 hour अप्रोक्सीमेटली. सो ओके, बाकी सारे पॉइंट्स भी नोट डाउन करो बिकॉज दे आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड दे मे हेल्प यू for further exams.
And yes, one more thing. Manusmriti is one of the most influential texts on Hindu law. The views are mixed, but it has an impact on Indian society still now. I don't know why, but it is still prevalent in India. Question number 24. Given below are two statements, assertion and reasoning. The age of Guptas is often described as a classical age in the sphere of cultural developments. Reason. While appreciating the artistic ideals of the Gupta period, it is argued that it marks one of the several epochs that saw impressive developments in artistic activity. So the correct answer is option B. Okay, option B is the correct answer. Why it's not working today properly? Correct answer is option B. Assertion that the Gupta period is the classical age of cultural development, which is true because Gupta period saw the growth of art, literature, philosophy. Like most of the famous works were prevalent of that time. Ajanta caves, Lion, capital of Sarnath, everything. Then reason that the Gupta, while appreciating artistic ideals, it is argued that marks one of the several epochs that saw impressive development in artistic activity. It is also true because the statement, the second reason does not explain why assertion is true, but though the statement is true, R is true, it does not explain. Okay, स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं करता है कि क्यों गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज बोला जाता है. रीज़न जो है वो, there were other periods in Indian history like Mauryan period which were well impressive developments of artistic activities. Then Gupta period represent the culmination of artistic and cultural traditions of India, and काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस वगैरह गुप्ता पीरियड के टाइम पर आए थे. रीज़न में अगर ऐसा रहता तो इट वुड हैव गिवन मोर स्पेसिफिक about the assertion, but it is not. Therefore both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. अगर स्टेटमेंट, ओके वन मोर थिंग, अगर रीजन में ऐसा आता था कि इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ द आर्टिस्टिक एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, देन इट वुड हैव बीन द ऑप्शन ए. ओके 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट correct concerning Dharmashastra text? They refer to the four varnas and norms of social living. They do not refer to various jatis. They refer to the Desha Dharma and Kula Dharma. They insist on everybody to follow dharma of his varna. They do refer to the jatis. यहाँ पर पूछा है नहीं. They do refers. Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, four caste, four varnas, and there are also many jatis within each varna. And these jatis are often associated with specific occupations. जैसे कि कुम्हार, देन जो गोल्ड स्मिथ होते थे उन्हें भी उनकी एक स्पेसिफिक सोनार, ऐसे डिफरेंट जातीज में डिवाइड किया गया है. ओके, धर्मशास्त्र टेक्स्ट इज स्टिल हैविंग इम्पैक्ट ऑन द हिंदू सोसाइटी एंड दे कंटिन्यू टिल डेट. मनुस्मृति है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र टेक्स्ट है. ये भी पॉइंट नोट करो कि धर्मशास्त्र बड़ी बुक है, उसमें उसका पार्ट है मनुस्मृति. ओके, Which of the following Mahajanpat supplied men and material to the Persian army fighting against the Greek? It is the Gandhar, जो सबसे पास में ही था वहाँ पर. गंधार वॉज द महाजनपद 6th से 4th century BC के अप्रोक्सीमेटली, एंड पाकिस्तान के पास में था. सो इट सप्लाइड मैन एंड मटेरियल टू द पर्शियन आर्मी ड्यूरिंग द एक्यूमेडियन पीरियड एंड हेलेनिस्टिक पीरियड. कैपिटल क्या थी उसकी? बाय द वे गंधार की कैपिटल क्या है? पुष्कलावती. ओके, देन लेटर कैपिटल वॉज मूव टू पेशावर जब कनिष्क का रूल था. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कालीबंगन वॉज सिचुएटेड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स ऑफ प्रोटो हरप्पन कल्चर हैव बीन डिस्कवर्ड? कालीबंगन कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान. कालीबंगन एंशियंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ्लरिश्ड फॉर एटलीस्ट 450 to 600 years, एंड इट इज़ बोथ प्री हरप्पन एंड पोस्ट हरप्पन, दोनों भी है, प्री भी है और पोस्ट भी है. ओके, एंड कॉपर एंड पॉटरी, ये दोनों वहाँ से प्रिवेलेंट है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, कालीबंगन इज ऑल्सो द साइट विच हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2600 BC एंड कंसिडर टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऐसा बोला जाता है कि जो अर्थक्वेक हुआ था उसके वजह से इंडस वैली का एंड हुआ था. Next, 28. Which of the following is considered as the first surviving Indian text containing a systematic discussion of astronomical instruments? It is option C, Brahmaputra Siddhanta. Brahmaputra Siddhanta, Sanskrit astronomical treatise written by Brahmagupta.
बाय ब्रह्मगुप्त. ओके, बाय ब्रह्मगुप्ता 628 CE. अरे बाय द वे, आज की ब्लैक थीम कैसी लग रही है ये भी बताना मुझे कमेंट्स में. आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट टुडे. ओके, ब्रह्मपुत्र सिद्धांता is called it is a book by Brahmagupta and it has approximately somewhat 20 or 30 chapters. Okay, approximately 30 chapters, and it provides instruction on how to construct and use the instruments like the वेनोनॉम, सनडायल, एस्ट्रोलैब, आर्मिलरी स्पेयर. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें दिए हैं. यंत्र अध्याय बोलकर उसमें एक चैप्टर है एंड उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम दिए हैं और उनका यूज़ कैसे करना है ये भी बताया गया है. ओके, मेनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब बाय ब्रह्मगुप्ता वेर अडॉप्टेड बाय अदर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एंड दे कंटिन्यू टू बी यूज फॉर सेंचुरीज. एंड मैथमेटिकल कंटेंट भी ब्रह्मपुत्र सिद्धांत का काफ़ी प्रिवेलेंट है, नोटेबल है. ओके, एंड वन मोर थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो. इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इनोवेशंस इंक्लूडिंग द फर्स्ट नोन यूज ऑफ जीरो as a placeholder in the numeral system and first known description of Brahmagupta identity, a formula for calculating the sum of cubes. ओके, ज़ीरो जो कि हमारे नंबर सिस्टम में फर्स्ट टाइम लिखा गया था, ये भी इसी बुक में लिखा गया है. एंड ब्रह्मगुप्ता आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स का सम सॉल्व करना ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, इट इज़ द मोस्ट लैंडमार्क टेक्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? आर एस शर्मा, अर्बन डिके इन इंडिया, जॉन विलियम्स, द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंसेस, ए एल भशम, द वंडर दैट वॉज इंडिया, रोमिला थापर, मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर. ऑप्शन डी, रोमिला थापर का जो ये है ये रॉन्ग है. मिथ एंड रियलिटी ये है डी कोसंबी की बुक बाय डी कोसंबी. ओके, बाय डी कोसंबी, दामोदर धर्मानंद कोसंबी. चलिए आगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से पैसेज पढ़ लेना. अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जाएंगे. What consequences flowed from the land grants given to Brahmanas? They buttressed the position of rulers. They led to the growth of agriculture, as not often the guarantee had to bring fresh land under cultivation. The undifferentiated ruler society got further stratified. The practice of endowing land grants to religious institutions and personages began from 600 BC or 600 CE. So the correct answer is option B, 1, 2 and 3. Okay, 1, 2 and 3. लैंड ग्रांट्स पहले से प्रिवेलेंट थे. जो ये लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत है. ठीक है, देन बाकी के स्टेटमेंट्स जो है ये यहीं पर दिए हुए हैं. सी, agrarian expansion, रूरल सोसाइटी बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्ट्रैटिफाइड. सी, करेक्ट आंसर मिल गया यहीं पर. ऐसे ही आगे भी देखें. द टर्म अर्ली मेडिवल रेफर टू हियर इज इंडिकेटेड टू हैव बिगन फ्रॉम 600 CE. ओके, given below are the two statements, assertion and reasoning. The early medieval period possessed some critical features of feudalism, but it significantly differ from the European feudalism. The early medieval South India was a period of urban growth, as it is evidenced by the flourishing crafts, trade guilds, and urban centers. Both A and R are true, but R is the not correct explanation of A. ठीक है. Which of the following statements are correct? There was a growth of sectarian religious groups during the early medieval India. Among them, a doctrine cult emphasizing on divisional worship gained popularity. Temples became dynamic spaces with political, social, cultural, and economic functions all rolled into one. The urban centers of early medieval India can be grouped into two categories. One may be called administrative and other commercial town. As the temples attracted diversified social groups, they tainted the narrative favoring exclusion. Correct answer यहाँ पर है option C, 1, 2, 3. Okay. Early medieval period saw growth of Vaishnavism, Shaivism, Shakti cults. Then यही cults ने डिवोशनल वर्शिप वगैरह स्टार्ट किया था एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स भी इसी से शुरू हुए थे. ओके, सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. टेम्पल बिकेम स्पेसेस विद पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल, इकोनॉमिक. ओके, ये भी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज ये पैसेज में भी दिए गए हैं. ओके,
Now statement 3. Urban centers of early medieval can be grouped into two categories, administrative and commercial. Correct. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स पॉलिटिकल पावर का सेंटर होता था और कमर्शियल ट्रेड कॉमर्स का. देन जो स्टेटमेंट 4 है, टेम्पल्स डिड अट्रैक्ट डाइवर्सिफाइड social groups. They did not necessarily dictate the narrative favoring exclusion. Sometimes the temples were explicitly exclusive, only allowing certain groups. मतलब कि जो वो बोलते हैं ना कि किसी को ही फेवर करना है और किसी को नहीं, तो ये टेम्पल्स हर बार नहीं करते थे. ओके वहाँ पर फेवरिज्म सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. टेम्पल्स में ये चलता था कि फेवरिंग मतलब कि शूद्रास को एंट्री नहीं होती थी, जो अनटचेबल्स होते थे उन्हें एंट्री नहीं देते थे, सिर्फ सिलेक्टेड क्लास ऑफ पीपल ही आ सकते थे टेम्पल में. ओके आगे बढ़ेंगे. 34. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेवेंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ रीजनल फॉर्मेशंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ between circa 600 to 1200 CE. Proliferation of Sanskrit text, growth of vernacular language, refinement in architecture and art, emergence of distinct regional styles in art and architecture. Correct answer is option 1 and 3. यहाँ पर पूछा है नॉट रिलेवेंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ रीजनल फॉर्मेशन, दैट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड रिफाइनमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. बाकी ये और ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है. ठीक है रिलेवेंट है. पैसेज में भी इसके अराउंड कुछ बातें दी गई है एंड जनरल नॉलेज पेज भी क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज संस्कृत टेक्स्ट रिफाइनमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये सारी जो बातें हैं ये दोनों भी रिलेवेंट नहीं है. ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज उस टाइम पर हो रहा था, रीजनलिज्म काफ़ी डेवलप हो रहा था एंड प्रोलिफरेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट वॉज अ साइन ऑफ कल्चरल यूनिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड. पर गुप्ता पीरियड तो तब डिक्लाइन हो गया था और रीजनल लैंग्वेज तब डेवलप हो रही थी, इसीलिए रीजनल लैंग्वेज भी डेवलप हो रही थी और रीजनल स्टाइल्स भी डेवलप हो रहे थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ फ्री किचन लंगर वॉज अडॉप्टेड बाय द सिक्स. इट वॉज द सूफी दरगाह. ऑप्शन 3. सूफी दरगाह लंगर जो बाबा फरीद ने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम मुस्लिम ऑफ चिश्ती सिलसिला सूफी ऑर्डर, और 12th-13th सेंचुरी के अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हुआ था ये इंडिया में. एंड क्या होता था लंगर में, खाना देते थे वेजिटेरियन, फ्री वेजिटेरियन किचन. ओके एंड इसी को किसने अडॉप्ट किया फिर, गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने स्टार्ट किया. फेड हंगरी होली मैन. फिर सेकेंड, गुरु अंगद देव्स वाइफ माता कीवी बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ लंगर सर्विंग अलॉन्ग साइड द फर्स्ट 5 गुरुज. गुरु का लंगर, द गुरुज फ्री किचन, ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक है. और गुरु अमरदास जी का क्या था, पंगत संगत, एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रैंक सिट्स एंड ईट्स टुगेदर. ओके अभी भी लंगर सिस्टम काफ़ी प्रिवेलेंट है, गुरुद्वारे में रहती है. यस. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सोर्स एंड द रीजन. चचनामा, रियाजुस सलातिन, मीरत अहमदी, नुस्खे दिलखुशा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन ए चचनामा सिंध रीजन, रियाजुस सलातिन बंगाल, मीरत अहमदी गुजरात एंड नुस्खे दिलखुशा डेक्कन. ड्यूरिंग द MSc टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नुस्खे दिलखुशा. चचनामा अभी कफर कुफी, हमीद अफ़ी कफर कुफी समथिंग ऐसा ही नाम है उनका. ठीक है. बुक returning he was writing in Persian but claimed to be translating a book in Arabic. Chachnama is a set in Sindh region and उसका चचनामा was never what it was claimed to be. मतलब कि mistakenly written book है एक तरह से. ये उसमें डिटेल रिगार्डिंग द चचनामा मतलब पर्शियन का ट्रांसलेशन कर रहे थे वो एक अरेबिक टेक्स्ट में, उसको उन्होंने नाम दे दिया था चचनामा और वो मिस्टेकन ट्रांसलेशन था. ठीक है. रियासुस सलातिन बंगाल रीजन में हुई थी और रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज बाय गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी. हम गुलाम लिख देंगे इनका, जैदपुरी पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ मैं अभी, छोटा सा जैदपुरी अगर ध्यान में आता है तो फटक से ध्यान में आ जाएगा आपको जब पढ़ेंगे. फिर मीरत अहमदी पर्शियन हिस्ट्री ऑफ गुजरात बाय अली मोहम्मद खान. अली मोहम्मद खान. एंड नुस्खे दिलखुशा भीमसेन बुरहानपुरी. ये औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई बुक है, उसमें उन्होंने डेक्कन के बारे में सब कुछ लिखा है. ओके लिख देते हैं इनका भी नाम, बखर कुफी ऐसा कुछ नाम है उनका एंड में. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 37. इन विच ऑफ द डायलेक्ट तुफत उल हिंद एंड 18th century सोर्स हैज़ प्रोवाइडेड अ वेरी एक्सटेंसिव ग्लोसरी. ओके इट इज़ इन ब्रज. ऑप्शन ए ब्रज डायलेक्ट तुफत उल हिंद 18th century source extensive glossary. The gift of India, तुफ उल हिंद, A gift of India is an 18th century source. Okay,
ग्लोसरी वॉज कंपाइल्ड बाय द ऑथर मोहम्मद हाशिम काफ़ी खान, लिख देते हैं यहाँ पे ना, मोहम्मद हाशिम काफ़ी खान इज द ऑथर, ठीक है। इट इंक्लूड्स ओवर 10,000 वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड इट इज़ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ द ब्रज डायलेक्ट। एंड काफ़ी खान कौन थे? स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। इट इज स्टिल रिलायबल एंड वैल्यूएबल सोर्स फॉर हिंदी लिटरेचर लवर्स। 38. After Alauddin Khilji's death, his price control measures collapsed, and under Qutbuddin Mubarak Khalji, price rose rapidly. Which of the following chronicles or travelers mention about growing prices during Mubarak Khilji's reign? ये है शेख मुबारक, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर तो पता है कि उन्होंने पूरा मार्केट कंट्रोल में किया था, बट उनकी डेथ हो गई थी 1316 में, एंड ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग रूलर का रूल ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड देन मुबारक खिलजी आते हैं, उन्हीं के बेटे। तो शेख मुबारक जो कि ट्रैवलर है, ये उनके टाइम पर दिल्ली सल्तनत में आते हैं, दिल्ली में आते हैं। ये राइट्स दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स सच एज फूड एंड क्लोथिंग बिकेम सो हाई दैट पीपल वर स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड देम। जो खिलजी के टाइम पर, अलाउद्दीन के टाइम पर जो प्राइसेस से सारे लोग खुश थे, वही सिचुएशन रिवर्स हो गई थी, ओके। एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था, एंड दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। 39. By which named it French traveler Jean Baptiste Tavernier called the capital city of Golconda? It is Bhagnagar, option B, Bhagnagar. 1660 में आए थे फ्रेंच ट्रैवलर बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर, एंड visited the kingdom of Golconda and wrote the capital city of kingdom is called Bhagnagar. The Persian called it Hyderabad. It is 14 or 15 leagues from Bijapur. ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ओके। एंड कुतुबशाही डायनेस्टी रूल करती थी उस टाइम पे गोलकोंडा में। विच डायनेस्टी? कुतुबशाही डायनेस्टी, ओके। आगे बढ़ेंगे हम। 40. Who founded the city of Burhanpur around 1400 on the bank of river Tapti? Nasir Khan Faruqi, option A. Nasir Khan Faruqi. Burhanpur was founded by him approximately 1399. 1399. फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रिंस ऑफ फारूकी डायनेस्टी ऑफ खानदेश, जो नसीर खान थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द फारूकी डायनेस्टी ऑफ खानदेश, एंड इट वॉज अनेक्स्ड बाय मुगल एम्परर अकबर इन 1601. ओके, बाद में अकबर ने उसको छीन लिया एज यूजुअल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओके। सो मलिक सवार, सरवर, जफर खान, दिलावर खान, घुरी, अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन सी। द करेक्ट आंसर इज मलिक सवार कहाँ के थे? जौनपुर सल्तनत, जफर खान गुजरात, करेक्ट, दिलावर खान मालवा, एंड अलाउद्दीन बहामन शाह, बहामनी सल्तनत। ये तो आपको नेम याद ही रहेगा, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह ऑफ द बहामनी डायनेस्टी, ठीक है। एक बार हम कैपिटल्स भी देख लेते हैं। मलिक सवार जौनपुर से बिलोंग करते थे, एंड उनका जो गंगा यमुना दोआब रीजन था, शर्की डायनेस्टी, मलिक सवार शर्की डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ख्वाजा ए जहान मलिक सरवर वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, एंड ये 1390 से 1394 की अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने ये डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी। जफर खान वॉज द जनरल ऑफ दिल्ली सल्तनत, रूलर अलाउद्दीन खिलजी, एंड ही वॉज फ्रॉम द गुजरात सल्तनत, ठीक है। दिलावर खान घुरी, मालवा प्रोविंस, एंड लेटर सुल्तान ऑफ द मालवा सल्तनत। ये कब उन्होंने एनेक्स किया था? जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था तब। अलाउद्दीन हसन बहामन शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी सल्तनत, एंड उनकी कैपिटल सिटी का नाम क्या था? गुलबर्गा, जिसे हसनाबादी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मंगोल खान तर्मशीरीन इन्वेडेड इंडिया इन द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तुगलक रूलर्स? सो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सुल्तान मोहम्मद। द करेक्ट आंसर इज 1 minute. It's not working. Okay. The correct answer is option B, Muhammad bin Tughlaq, MBT. Okay. Yes. The correct option is option B, Muhammad bin Tughlaq. मंगोल खान तर्मशीरीन, son of दुआ खान, और कौन थे? रूलर ऑफ चागताई फ्रॉम 1326 to 1334, ठीक है। एंड फेरिस्ता ने इसके बारे में बोला है। फेरिस्ता प्लेसेस द इन्वेजन एट द बिगनिंग ऑफ द राइन ऑफ मोहम्मद तुगलक, पोर्ट्रेज मोहम्मद तुगलक एज अ कावर्ड, डर गए थे ऐसा उन्होंने बताया है। एंड ही सेज दैट तर्मशीरीन इन्वेडेड हिंदुस्तान विद अ वास्ट आर्मी
ओके, बदौनी ने भी इसके बारे में बोला है. दिस इन्वेजन ऑकर्ड इन 1328-29 अप्रोक्सीमेटली. कब हुआ था ये इंसिडेंस? 1328-29. ओके. Tarmashirin marched against Delhi with an enormous army. He captured several forts and put under confinement the people of Lahore, Samana and Indri to the borders of Budan. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. 43. In 1579, Mahazar was drafted by which of the following scholars? Mahazar, Abul Fazl and Sheikh Mubarak, Abdul Nabi and Badoni, Sheikh Mubarak and Faizi. The correct option is option A, Abul Fazl and Sheikh Mubarak. Okay. Mazhar signed by leading ulemas. Sheikh Mubarak drafted and issued a Mahazar in 1579. It was signed by leading ulemas, Sadr and other Muslim law experts, declaring Jalaluddin Muhammad Akbar as Amir ul Momin and an Imam e Adil over and above Mujaddis. टाइटल दिया था. ओके, किसे? जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद अकबर. अकबर का पूरा नेम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. उन्हें टाइटल दिया गया था अमीर उल मोमिन एंड इमाम ए अदिल. इन दिस मज़ार इशूड बाय ड्राफ्टेड बाय शेख मुबारक, बट अकॉर्डिंग टू V.A. Smith, मज़ार एंड फैजी ड्राफ्टेड बाय शेख मुबारक एंड इशूड इन September in 1579 as an infallible decree by Akbar. Mahazar is a document that made Emperor Akbar the sole judge of political and religious matters in the Mughal India. Okay. Final draft was prepared by Sheikh Mubarak and his son Abul Fazl. ठीक है. Abul Fazl also helped him in the preparation. समझा अभी महजर का मतलब क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अकबर को उन्होंने सोल अथॉरिटी बना दी थी, सोल जज ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर्स. 44. Which of the following sources deals with the history of Sindh? फतवा जहांगीरी, मीरत सिकंदरी, तारीख तहरीरी, मज़ार शाहजहानी. ऑप्शन D 3 and 4. तारीख ताहिरी एंड मज़ार शाहजहानी. ओके. फतवा जहांदारी ये बुक तो ज़ियाउद्दीन बर्नी की बुक है. ओके. एंड इसमें उन्होंने पॉलिटिकल थियरी एंड स्टेट क्राफ्ट के बारे में बोला है. उसके बाद में मीरत सिकंदरी इज़ बाय सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू. ओके. एंड इट इज़ अ पर्शियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द मुगल एम्पायर. तारीख ताहिरी बाय तेहरिल डायनेस्टी पर्शियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ तेहरिल डायनेस्टी की स्टोरी है, हिस्ट्री है. ओके. मज़ार शाहजहानी इज़ अ पर्शियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ सिंध ऑथर्ड बाय यूसुफ मिराक. इसके ऑथर का नाम काफ़ी क्लियरली प्रोनाउंस किया हुआ है. ओके. यूसुफ मिराक. एंड यस, आगे कभी एग्जाम में काम भी आ सकता है ज़ियाउद्दीन बर्नी, क्योंकि ये जो फेमस राइटर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ये ज़ियाउद्दीन बर्नी, देन अमीर खुसरो, ऐसे these are the authors about whom the questions do repeat, at least some or the other way. 45. Identify the two emperors of India and Uzbekistan who agreed to fix Hindu Kush or Hindu Kush as the frontier of the two empires. This is a very interesting question and it was Akbar and Abdul Khan Uzbek. Okay. Hindu Kush, great mountain system of Central Asia. Hindu Kush Himalayas span from like in the regions of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, नेपाल, पाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. एक पामीर नॉट बोलकर भी प्लेस है, हिमालय के ऊपर जाता है एंड वहीं पर हिंदू कुश के माउंटेन्स भी है. ठीक है. तो इट इज़ कंसिडर्ड द थर्ड पोल बिकॉज इट हैज़ दैट सिग्निफिकेंस इन द क्लाइमेट. जो इंडिया पर स्नो नहीं आता है ना, इंडिया में जब बहुत ठंड रहती है तब भी बर्फ़ नहीं गिरती है, तो दैट इज़ द रीज़न. सर्बिया से जो कोल्ड विंड्स आते हैं, बट उसके वजह से जो हिंदू कुश एंड हिमालयास है तो वो उन्हें एज अ बैरियर रोक कर रखते हैं. ओके. जहांगीर, yes, Abdul Khan Uzbek, known as the Old Khan, was an Uzbek ruler of Khanate of Bukhara, and he was the last Shah Bani dynasty Khan of Bukhara. ठीक है. एंड नेक्स्ट, जहांगीर एंड अब्दुल खान उज़्बेक के बीच में भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं. ठीक है. एंड अब्दुल मोमिन खान जो कि इनके बेटे रहते हैं, इनके भी बीच में, जहांगीर और इनके बीच में भी इश्यूज़ बाद में क्रिएट होते हैं ड्यू टू दिस ट्रीटी विच वॉज साइंड बिटवीन अकबर एंड अब्दुल खान उज़्बेक. ओके. 46. रिगार्डिंग तकवी लोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? These were given to peasants for agricultural purposes. These were given to traders for trade purposes. These were
advanced through the Chaudhrys and Mukaddams who distributed them among the individual peasants. Chaudhrys and Mukaddams did not stand surety for their repayment. Correct answer is option 4. यहाँ पर पूछा है not correct. ठीक है, तो this were given to traders, no, this were given to peasants for agriculture purposes. Okay, and this were advanced through Chaudhrys and Mukaddams. Correct. लैंड होल्डर्स, ज़मींदार जो होते हैं, अभी के ज़मींदार लेटर ऑन इन्हें ज़मींदार बोला जाता था, पहले इन्हें मुकद्दम्स एंड चौधरीज बोलते थे, हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग इंडिविजुअल पीजेंट्स. करेक्ट. एंड श्योरिटी फॉर रीपेमेंट हुआ करती थी. ठीक है, देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दिस लोन. यूजुअली पेमेंट्स रिटर्न आ जाती थी. ओके, एंड तकवी लोन्स वर अ शॉर्ट टाइम लोन given to poor farmers to purchase seeds, fertilizers, equipment and for other agricultural purposes. These were introduced to enhance the productivity of crops and help the poor farmers. Takvi was an important agricultural institution during the time of Mughal. Okay, when agriculture was affected by any natural calamities like flood, droughts, famines, the Mughal government used to suspend or minimize revenue collection and furthermore made Takvi loans towards the farmers to strengthen them. And this were distributed through the zamindars, that is the distributing agents like zamindars and talukdars, who were advised to lend takvi to riots and make necessary adjustment on account of public revenue. And such loan were always free from any surcharge like interest वगैरह नहीं देना पड़ता था इसके ऊपर. ओके, क्वेश्चन नंबर 47. मीर जुमला invaded the Ahom kingdom and occupied the Ahom capital Gargaon. A treaty was signed between him and the Ahom kingdom in 1663. When did Ahoms force the Mughals to give up Koch Hajo and accept the river Manas as the boundary? It is in option B, 1681. By the way, the 1663 treaty, that was Treaty of Gilaj Hari Ghat in 1663. Okay, Treaty of Gilaj Hari Ghat in 1663 January with the Ahom king accepting tributary status. ठीक है, और ये किसके वजह से हुआ था? बिकॉज ऑफ द डिफेक्शन ऑफ अहोम किंग, अहोम कमांडर बदुली खान. एक्चुअली मीर जुमला ने इन्वेड किया था 1662 में एंड ही कैप्चर्ड द अहोम कैपिटल गरगांव एंड मधुपुर, बट रेनी सीजन स्टार्ट हो गया था एंड दे वर फर्दर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मूविंग अहेड. एंड इसी टाइम पर अहोम किंग जो कि सुतमला थे वो वहाँ से भाग गए थे बिकॉज उनके कैपिटल पर तो कैप्चर कर लिया था. एंड उनके जो कमांडर थे उन्होंने फिर ट्रीटी साइन कर ली थी, ट्रीटी ऑफ गिलज हरिघाट. ओके, बट लेटर मीर जुमला डाइड एंड अगेन द अहोम्स फोर्स द मुगल टू एक्सेप्ट टू गिव अप the Koch Hajo and accept the river Manas as the boundary in 1681. But due to this the Mughals were upset and they again started the battle of Itakhuli in 1682. And this led to the struggle between both the kingdoms and the later ended the rule of Ahom. Okay, and ब्रिटिशर्स ने फिर इसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद की हिस्ट्री ऐसी है. For ensuring safety on the roads and for extending comforts to travelers, he built sarais on highways at a distance of 2 kosh. The travelers could get beds and cook food. There was also provision for uncooked food supplies. He built some 1700 such sarais. Who is the ruler? Sher Shah Suri. Yes, सराइज अगर आती है ना ऐसे ट्रैवलर्स के लिए, किसने सराई बनाई? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है. ही वॉज शेर शाह सूरी एम्परर. ही बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड. ओके, एंड काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है जो बहुत ही अच्छे हैं शेर शाह सूरी के, एंड इनके ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं. तो एक बार एनसीईआरटी, अगर कोई बहुत ही बड़ी बुक नहीं भी होंगी, एनसीईआरटी भी होंगी पुरानी, तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं, या फिर गूगल करो शेर शाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. देयर इज़ समथिंग रियली नाइस, कॉम्पैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कंटेंट अबाउट हिम. ओके, आगे पढ़ेंगे. Which one of the following products was not introduced in India by the Portuguese? Okay, which was not introduced? It is option B, betel. Betel was previously present in India. The Portuguese introduced tobacco, pineapple, papaya, cashew nuts and chili. Okay, betel यानी पान के पत्ते. Okay, and chili भी पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया है. Portuguese and Spanish traders introduced chili pepper in Africa and India in Asia. Okay, Portuguese and Spanish दोनों ने मिलकर किया है चिली को. चलिए आगे बढ़ते हैं. 50. The early literacy reference to cotton cradles
bow comes from which of the following Persian text? It is Khawa's lexicon. Okay.